माननीय स्पीकर, मैं अगम चौधरी जो लोकसभा का मैंबर चुनिया गया हाँ ईश्वर की सौ खाना मैं कानून राय स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा ਅਤੇ निष्ठा रखांगा भारत की सर्वसम्मता ਅਤੇ अखंडता ਨੂੰ कायम रखांगा ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ मैं संभालने वाला हाँ उसके कर्तव्य ਨੂੰ श्रद्धापूर्वक निभावांगा। Ms. Samona Thakur. Ms. Samona, who stands elected from Sirsa constituency of Haryana, will now take an oath or an affirmation. Do you want to take an oath or an affirmation? In which language you would like to take an oath? Honorable Speaker, Sir, I, Sumana Thakur, having been elected a member of the lower house of the Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Mr. Raghav Sharma. Mr. Raghav Sharma, who stands elected from Udham Singh Nagar constituency of Nainital, will now take an oath or an affirmation. Do you want to take an oath or an affirmation? In which language you would like to take an oath? Honorable Speaker, Sir, I, Raghav Sharma, having been elected a member of the lower house of the Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. It is my sad duty to inform the House of demise of our former colleague, Shri Daksh Kumar Sharma. He worked for the ballot classes and downtrodden. He was the member of 16th and 17th Lok Sabha and an able parliamentarian and an able orator. He keeps keen interest. Rise to pay my tributes to Shri Daksh Kumar, whose death has been deeply mourned by all. He had a bright future before him. To Shri Daksh Kumar, whose death has been deeply mourned by all and his whole family. He was with us to the very last moment. I would like to extend my deep condolence to his family. So condolence to the Bhee family. Now start. Question number 101, Ms. Khushi. Honorable Speaker, Sir, will the Honorable Minister of Railways be pleased to state the arrangements made by the government regarding basic amenities in the railways for the people of the country? Concerns regarding this matter. In this regard, 200 stations are brought under other station scheme and are provided with basic amenities like toilets, drinking water, capital bio toilets, increasing the number by 17,388. महोदय जी, मंत्री जी, क्या आप बताने की कृपा करेंगे सरकार महिलाओं की रेलगाड़ियों में सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है? महोदय, सरकार ने इसके लिए 182 और 138 सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए हैं। 400 रेलवे स्पीकर सर, इन्हें क्या पता जमीनी सच्चाई के बारे में? ये सिर्फ जनता को मूर्ख बनाना जानते हैं। बैठ जाइए, उन्हें बोलने दीजिए। आप बोलिए। 400 रेलवे स्टेशन को सीसीटीवी कैमरा सर्विसेज भी दी है। महोदय जी, इसके साथ साथ ट्रेन में और ऑफिस से बाहर निकल कर देखा है।
बैठ जाइए, उन्हें बोलने दीजिए। औरतों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में फ्री जोन कंपार्टमेंट्स भी बनाए हैं। Miss Khushi, Sir, the black marketing of reserved tickets is another serious matter. The government has to ensure stopping this. Minister of Railways, So, our government has started an initiative in this regard called YTSK, Yatri Ticket Suvidha Kendra, to curb the black marketing of reserved train tickets. Apart from this, passengers are allowed to book tickets up to 120 days in advance, and they receive SMS alerts for arrival and departure of trains. Also, Operation 5 Minute has been started that allows passengers to acquire tickets. now question number 102. Miss Kriti, Honorable Speaker, sir, students in India often face problems and confusion while selecting their options, while comparing ratings given by different international rating agencies, where our universities hardly figure in top 200. Don't you think it's time for specific rating for higher education institutions? Honorable Minister of Education, Honorable Speaker, sir, our ministry is busy in preparing a framework to rank India's higher education institutes. This India Center ranking framework will give an alternative to Indian students. The ministry even held consultations with US and prime ranking authorities to look at how to improve the rankings. Miss Kriti, Would have a worthy minister here to answer what will be the grounds for such a rating and when can we expect it to be operational? Honorable Speaker, sir, academic institutes will be assessed on parameters like teaching, learning, research, collaborative practice, professional performance, outreach, and inclusive action. One of the important parameters is outreach and inclusive action, which will assess institutes on affirmative actions and steps taken to reach out students from disadvantaged sections of society. Moreover, the rankings will be driven portal wherein institute will be able to produce the information. now question are end, and we will start with 0 hour. In 0 hours, the members can ask whatever is important. First agenda, UCC. Mr. Divesh Goel. Honorable Speaker, sir, I think controversy on UCC is a thoughtless exercise. The reason why I regarded it as thoughtless is that I do not know about the proposal. By the way, what do you mean by uniform? Are all customs to be uniform? Under Article 30, custom are law, so will this be uniform? Sir, Law Commission in 2021 said that it should never be put into practice. I think this is done for political purpose. As 2024, elections are coming. Something is similar. So, Ram will form in January. और राम मंदिर तो लोगों की आस्था का प्रश्न था, आपने इसे भी राजनीतिक वादी के लिए इस्तेमाल किया। Sir, you know what Gawalkar said on UCC in his interview? He said uniformity is the key to the downfall of the nation. There is no uniformity even in the political party. Sir, Supreme Court has passed a decision that UCC is a governmental action, but it has not said that on which things it should be implemented on. This controversy on UCC is only a time waste. I agree that Jawaharlal Nehru said that a uniform civil code is something that's desirable, but you have to take everyone along with you. It can't be imposed on people, and that is the situation which I think we are facing. Because for people in a country, these are rights that they have enjoyed since the days of the British rule. Whenever you take away something from people, there is going to be resistance. That's the challenge which we face. I'm thinking going ahead with this, as you know. Dr. B.R. Ambedkar and others put the desirability of the UCC into place in the directive principles, but not as something that could actually immediately be implemented. जिनके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, वो भी आए हैं यहाँ करने नसीहत हमको। बैठ जाइए, सदन की गरिमा बनाए रखिए। It is Supreme Court often called for this to be
taken forward. But the bottom line that we have to face is that it hasn't been possible to build political consensus on this or even social consensus among its those most likely to be. हो सकता कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो Speaker sir, if a house has one law for one member and another law for another member, can the house run? Then how will the country run with a dual system? We should remember that the Constitution of India also talks about equal rights to citizens. That is why need of uniform civil code, one nation, one law was felt. It will help in national integration, gender equality, upward constitutional values, and evolution of progressive judicial system. अगर मैं एक साफ सिंपल तरीके से बोलूं तो ये पूरा मुद्दा है सोसाइटी से ऐसे लॉज हटाने का जो डेरोगेटरी है, डिस्क्रिमिनेटरी है, बिना किसी लॉजिक या लॉ के साफ साफ गलत है, जैसे अनटचेबिलिटी. Sir, can you tell please the house how practical UCC is? Because we have vast tribal cultural diversity. It can also be transferred into the code. The idea is not to impose one practice onto another. Certain basic rights should be uniform to everybody. Just look at how many cases are pending in different codes. These cases are pending for decades. Muslim personal laws does not even exist in Pakistan and Iran. These need to change. Society ने अपने personal laws को reform किया है to take its misuse. Turkey, Egypt, Indonesia, Jordan, Tunisia, इन सब ने अपने personal laws को reform किया है अपने constitution के हिसाब से. It makes all sense but remains controversial due to misuse by religious forces and its misinterpretation by politicians. जब इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी का एक ऑब्जेक्टिव हो और हमारी पार्टी का अलग ऑब्जेक्टिव हो, मंशा चाहे कोई भी हो, अगर उनका एक ऑब्जेक्टिव है कि यूसीसी नहीं लाना चाहिए, तो महोदय इस पर एक हेल्दी डिबेट की जरूरत है. The way to do it is create consensus, bring experts from all communities and faiths together, draw from the best of traditions and practices, make them applicable for modern times, and unite them under one civil code. Ms. Gauri, अध्यक्ष महोदय, किस कानून ने यूसीसी लागू करने को कहा है? Can you tell me that? Please, तभी मैं आपके सवालों के जवाब दूं. क्या ये रिलीजन को लेकर है क्या? हम पिछले 20 सालों से बता रहे हैं कि 370 आर्टिकल के बाद बीजेपी की मंशा बहुत नाजायज है और उनका मकसद है जम्मू एंड कश्मीर की आबादी को बदलना. अब ये निश्चित जम्मू एंड कश्मीर में सबा से सुलह पाएगा. ऐसे में हमारे कौम के लोग, मुसलमान लोग इस बात को लेकर आपस में बातचीत कर रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कुछ पूछना चाहती हूँ. आखिर क्यों आपकी पार्टी ने 9 साल बाद यूसीसी की बात की? हर दिन आपकी पार्टी क्यों मुसलमानों को निशाना बनाती है? आपकी सरकार ने सिर्फ हिंदू मुसलमान को मारने का काम किया है. शर्म आनी चाहिए आपको. मर्यादा बनाए रखिए. लेकिन इतना जरूर है कि अगर यूसीसी है तो फिर वो सबके लिए है. यूनिफॉर्म मीन्स यूनिफॉर्म फॉर एवरीबॉडी. अब अगर बीजेपी इसमें से एक एक करके बाकी कम्युनिटीज को निकालेगी तो इसका क्या मतलब निकाला जाएगा? हमने नहीं निकाला जनाब, ये लोग खुद ही निकले हैं. हमने ना ही इन्हें निकाला है और ना ही निकलने को बोला. बैठ जाइए, इन्हें बोलने दीजिए. कब निकाला जाएगा कि ये सिर्फ एक कौम के लिए है या ये सिर्फ मुसलमानों के ही पर्सनल लॉ को बदलने के लिए है? अगर ये यूनिफॉर्म है तो फिर ये सब पर लागू होना चाहिए. आपकी पार्टी मुसलमानों के पर्सनल लॉ को बदलने की बात करती है. हमेशा मुसलमान ही क्यों? हम सिर्फ शरिया लॉज को बदलने की बात नहीं करते. हम हर धर्म के जो भी डेरोगेटरी लॉज हैं उन्हें बदलने की बात करते हैं. फिर आप अब खुद ही अपने आप को ट्रिगर कर रहे हैं तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं. बैठ जाइए, उन्हें बोलने दीजिए. बैठ जाइए. और अब बीजेपी इसमें से किसी को भी एग्जेम्पशन देने का काम करेगी, फिर चाहे वो क्रिश्चियन हो, दलित हो, ट्राइबल हो या सिख हो, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान भी फिर ना तो सिर्फ एग्जेम्पशन मांगेंगे बल्कि एग्जेम्पशन फिर हासिल भी करेंगे, जो कि एक फंडामेंटल राइट है. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी ये मेंशन है कि भारत के लोगों को उनके अपने अपने रिलीजियस अफेयर संभालने का मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती. देखिए सर, इस यूसीसी का फॉर्मूला क्या है? एक कल्चर, एक जुबान, एक ही मजहब रहेगा. हम इसी
बैठ जाइए उन्हें। बेशुमार जुबानें, बेशुमार मज़ाहिर बोले जाते हैं। यूसीसी के नाम पर तो वो कभी नहीं रह सकते ना। इसका बीजेपी क्या समाधान निकालेगी सर? ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से कुछ पूछना चाहती हूँ कि राज्यों के जब चुनाव आते हैं तब इनकी पार्टी यूसीसी की बात करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए यूसीसी निश्चित रूप से भारतीय जनता से लेकर भारतीय जनता पार्टी की हमारी यात्रा का, आज तक की हमारी राजनीतिक यात्रा का एक वादा रहा है। देश की जनता से और न केवल बीजेपी, संविधान सभा ने अभी देश भर के विधानमंडलों को और संसद को ये सलाह, समान कानून होना चाहिए जो देश की संसद और देश के विधानमंडल जारी करे। संविधान सभा के इस कमिटमेंट को भुला दिया। हमारी 50 से संविधान सभा ने आर्टिकल 44 के अंदर कहा है कि देश के विधानमंडल को और देश की संसद को जब भी अनुकूलता हो यूसीसी इस देश में लाना चाहिए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजा जी, इन सबके दस्तखत हैं। अब इन लोगों को क्या कहोगे? ये भी सांप्रदायिक सोच के थे ना, वो सांप्रदायिक सोच के नहीं थे। 67 के बाद आपने सांप्रदायिक सोचना शुरू किया, वो तो ठीक ही सोच के थे। किसी भी सेक्युलर नेशन के अंदर हर धर्म के नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए, कानून धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। हमारे जनसंघ के समय से ये हमारे घोषणा पत्र का वादा है, जिसको हम पूरा कर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्यों, हमने कहा था राम मंदिर बनवाएंगे, प्रधानमंत्री जी ने उसका भूमि पूजन कर दिया। और 2024 का टिकट निकलवा के रखिएगा, जनवरी का भव्य राम मंदिर आपको अयोध्या में दिखाई देगा। हमने कहा था ट्रिपल तलाक बैन कर देंगे, हमने कर दिखाया। हमने एक देश में दो निशान नहीं चलेंगे, धारा 370 हटकर रहेगी। और 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 को हटा दिया। धारा 370 हटी, कौन सा चुनाव था? राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, कौन सा चुनाव था? ट्रिपल तलाक बैन हुआ, कौन सा चुनावी मुद्दा था? अगर यूसीसी आएगा तो ये देश की एकता के लिए काम करेगा, ये हमें बेहतर समाधान प्रदान करेगा इन द टाइम ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज। मेरे हिसाब से यूसीसी के आने से डाइवर्सिटी, कल्चर, धर्म को So, the country is one. CRPC and IPC are one for all. If UCC is one, it will help society become one. It will minimize litigation and give relief to the people. The difference that is recognized can make the Honorable Speaker, sir, I stand to oppose this to get in the law is to ensure more women get elected to the parliament and the state assemblies. But if that is the justification, why is it not being extended to the OBC and the Muslim women? Muslim women are 7% of the country, but their representation in Lok Sabha is only 0.7%. The annual drop rate for Muslim women is 19%, while for others it is only 12%. Nearly half of the Muslim women are illiterate. This government wants to increase representation for Savarna women. माननीय महोदय, कभी इन्हें ट्रिपल तलाक से गुरेज है, कभी धारा 370, कभी राम मंदिर और कभी यूसीसी, और अब ये नारी शक्ति में बात करने वाले वुमेन रिजर्वेशन पर जब एतराज जता रहे हैं, लेकिन ये अनजाने में ही हमारी सरकार को फायदा दिला रहे हैं। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। 690 women MPs have been elected to the 17th Lok Sabha, but only 25 of them came from the Muslim community. No Muslim women got elected to the parliament in 1957, 1962, 1991 and 1999. The number of Muslim women has never gone beyond 4 in this house. But in the 1951 presidential order, you are deceiving the Muslim community by denying them a quota in this women reservation. This is a double discrimination, being a woman and a Muslim. You want parliament of only बड़े लोग. अरे बड़े लोग तो आप सब हैं, हम तो चाय बेचने वाले हैं। बैठ जाइए, उन्हें बोलने दीजिए। This bill will close the door for Muslim representation in parliament and assemblies.
in India is settlement, which every religion is equal. So there is no chance of having reservation based on the terms of religion. But still, there are some states who have reservation problems. What does this bill really say? Article 334 of this bill says the reservation shall come into effect only after the delimitation has been undertaken. So, delimitation will only be undertaken after the relevant figures for the next census have been published. The rotation of the seats for women shall take effect after each subsequent exercise of delimitation. So, what does this mean in truth? BJP's double speak style? It means we do not know when we are having 33% of women sitting in the Lok Sabha. महोदय जी, इनकी बेचैनी हम समझ सकते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कोई उम्मीद नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। हार का दिन तो तय है, ना जाने इन्हें रात भर नींद क्यों नहीं आती। 2024 में आपकी हार तय है श्रीमान। बैठ जाइए। So, as my colleague from DMK spoke, according to the data, we will have a 0% increase for number of seats for Kerala, 27% for the Tamil Nadu, but 79% increase for both Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Forget 2024, this may not be even possible in 2029. We are being asked again and again, do we support the women's reservation bill? Trinamool Congress इस bill को support करेगा या नहीं? BJP stands to the original idea, where she has unconditionally sent 37% of the women MPs to this parliament. What this government does? Our leader and Trinamool Congress have already worked to support this bill. You, this ruling government, this ruling dissension, you need to support us. You need to send more than 33% of women MPs to this parliament. Thank you very much. What we need is the direct action. Since 2003, our party leader himself has been ensuring 30% of the representation for women among the office bearers at the national level as well as the state level. The women reservation bill provides for 33% of the reservation for women has been passed but may not come into effect before 2029 Lok Sabha elections due to the need for delimitation exercise and the census. So, this will also increase the number of women parliamentarians to 181. The women reservation bill already has been passed, but it's a really presidential bill. It provides and guarantees 33% of the seats reserved for women in Lok Sabha, the lower house of the parliament, for 15 years. So, our party leaders are confident that the women reservation bill will provide for 33% quota for because plenty of women belonging from different castes, different religions, and different states who are still fighting for their dreams, rights, and independence. Jai Hind, Jai Bharat. Mr. Shiva? Sir, a serious breach of has been committed by the leading newspaper of Delhi while committing of recommendation. The Public Account Committee, the paper has attributed dishonest motives, and I have requested you to raise a question on that matter now. You may give notice along with a copy of a newspaper cutting, and I shall consider it. You cannot bring a surprise on me like this. Sir, I have already given notice of it at 10 a.m. today. It will be examined when it comes to me. I shall consider it and let you know my decision. Now, paper to be laid. Country affairs. Sir, on the behalf of Home Minister, I beg to lay on the table a copy of detailed demands for grants, Hindi and English version of the Ministry of Corporation for the year 22 and Honorable Minister of Agriculture. So, on the behalf of Shri Giriraj Singh, I beg to lay on the table a copy of detailed demands for grants, Hindi and English versions of the Ministry of the Corporation. A warm welcome to Austrian delegation to strengthen bilateral relations between the two countries. Good morning, everyone. I have been privileged to speak on the behalf of all the delegates of the Government of India for the vote of thanks. We would like to express our sincere thanks to our host, the Indian government, for their warm welcome and hospitality, for the excellent facilities for our meetings, and for all the logistics In the Tripura, it includes the Dalam community as the sub-tribe of the Kukli tribe. In the list of SEs
most of the matter of the bill. So, I had already introduced you. Now, the House will take up private member resolutions. Ms. Ramanpreet to move the resolution. सभापति जी, मैं देश में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय करने के संबंध में प्रस्ताव पेश करती हूँ। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश के विभिन्न भागों, विशेषकर आंध्र प्रदेश राज्य, मैं आंध्र प्रदेश क्षेत्र से आती हूँ। मैंने जनता को पानी की कमी से जूझते देखा है, जहाँ महिलाएं सिर्फ एक मटका पानी भरने के लिए 5 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करती है, जहाँ देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपने एक फैसले में पीने के पानी को नागरिक अधिकारों के दायरे में माना है। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने भी मानव अधिकारों की अपनी फहरिस्त में पेयजल को शामिल किया है। बावजूद इसके जनता को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराना सरकारों की प्राथमिकता में नहीं दिखता है। अन्य बुनियादी सहूलियतों और अधिकारों को यदि छोड़ दें तो मुल्क के नागरिकों को साफ पानी उपलब्ध नहीं। हाल में एक जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में हैंडपंपों के माध्यम से जो पानी घरों तक पहुंचाया जा रहा है वह प्रदूषित है। पाइपलाइनों में दरारें पड़ने की वजह से उसमें गंदा पानी मिल जाता है और लोग इसी प्रदूषित पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। गौरतलब है कि यह जांच रिपोर्ट खुद भारतीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और आंध्र प्रदेश जल बोर्ड की है। ताजा रिपोर्ट ने भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में पेयजल की स्थिति की कलई खोल दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रत्येक साल करीब 7,83,000 लोगों की मौत दूषित पानी और खराब साफ सफाई की वजह से होती है। इसमें लगभग 3.5 लाख लोग हैजा, टाइफाइड और आंतरिक शोथ जैसी बीमारियों के कारण मौत की भेंट चढ़ जाते हैं। ये बीमारियां खराब साफ सफाई, भोजन और मानव अवशिष्टों से फैलती है। मैं भी माननीय सदस्य द्वारा लाए गए इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए दिख रही है। वे पेयजल मुहैया कराने का एकमात्र रास्ता नदी जोड़ों परियोजना मानते हैं। उनका मानना है कि देश के वे शहर जो पानी के किनारे नहीं बसे उन तक भी पानी पहुंचाए। लेकिन आश्चर्यचकित है कि देश के 2 बड़े शहर दिल्ली और आगरा यमुना नदी के पास बसे होने के बावजूद भी गंगा पेयजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनेक पानी नदियों और भूमिगत जल में जाकर मिलता जा रहा है, जिससे पीने वाले पानी में रासायनिक तत्वों की मात्रा बढ़ती जा रही है। मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन Speaker sir, I congratulate the mover of the resolution, Ms. Ramandeep, as well as the other honorable members who have spoken on the resolution for focusing at the altar of public opinion on one of the vital social and health issues facing the country today. Sir, the purpose of my intervention is only to place before the House the various efforts made by the various departments of the government. Sir, I would like to submit that the Government of India has launched various schemes to mitigate the poor quality of drinking water. National Rural Drinking Water Program scaling up from sector reform initiated in the form of Swachh Jal Dhara program. Bharat's advanced program with emphasis on providing drinking water within a period of 5 years to 55,069 uncovered habitations. In the view of the efforts undertaken by the government, Ms. Ramanpreet, Sir, I am grateful to the honorable members for lending support to my resolution. In view of the assurance given by the honorable minister, and since government is already working to deal with this menace, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे थे आप। महफिल के इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब हमने बड़े उद्योगपतियों के मामले में बोला तो बीजेपी के कुछ नेताओं को कष्ट हुआ। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको मुझे लोकसभा के सांसद के रूप में बहाल करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछली बार जब मैंने बड़े उद्योगपति के मामले में बोला तो शायद मैंने आपको परेशानी दी। चुनाव में मेहनत नहीं करते, कम से कम सदन में तो मेहनत करके आए। ये ध्यान केंद्रित किया था, इससे शायद आपके वरिष्ठ नेताओं को कष्ट हुआ। उस दर्द का असर आप पर भी होगा, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन मैंने सच बोला। मैं मणिपुर गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मणिपुर अभी तक नहीं गए।
इससे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। सदन की गरिमा बनाए रखिए। रूलिंग पार्टी वालों ने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। मणिपुर का मर्डर किया गया है। समय रहते हमारी सरकार के साथ खड़े हैं। आप भी आ जाइए, इस बिल को पास करवाइए। आपने मणिपुर में मेरी भारत माता की हत्या की है। आप देशभक्त नहीं, आप देशद्रोही हैं। प्राइम मिनिस्टर में इसलिए हिम्मत नहीं है कि वह मणिपुर जाए। आप भारत के रखवाले नहीं बल्कि हत्यारे हैं। Sir, I visited Manipur and met women and children as the relief movement. What happened with you? She said, the small son, only child, was shot before my eyes. I spent the whole night with the body of my child, and then I felt the fear. I speak it properly. Raman used to listen only two people, Meghnad, Home Minister, and big businessman. Lanka was not burned by Hanuman, but by Raman's arrogance. Ruling party setting fire to the entire country, from Manipur to Haryana. First you sprinkled kerosene in Manipur, and now you are sprinkled kerosene in Haryana. You setting fire to the entire country. चाहता हूँ कि तूफान ज्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती है, तूफान ज्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो तो बड़ी बड़ी हस्तियाँ डूब जाती है। आप प्रधानमंत्री जी, अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप बोलिए। ये अधिकार आपका नहीं है, ये अधिकार मेरा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अब आप बोलिए। किसकी कश्ती डूब रही है वो तो सबको दिख रहा है। बल्कि विपक्ष का प्रोटेस्ट है। मेरे मानना ये है कि भगवान का आशीर्वाद है कि आज विपक्ष ये अविश्वास प्रस्ताव लाया है। मैंने 2018 के अविश्वास प्रस्ताव में भी कहा था कि हमारे लिए नहीं बल्कि विपक्ष के लिए प्रोटेस्ट है, और परिणाम स्वरूप वे चुनाव हार गए। देश की जनता ने जो हमारी सरकार पर भरोसा बार बार दिखाया है, मैं प्रधानमंत्री देश की करोड़ों जनता का आभार व्यक्त करने आज इस सदन में आया हूँ। एक तरह से विपक्ष का अविश्वास हमारे लिए हमेशा ही भाग्यशाली रहा है। बीजेपी 2024 में सभी चुनाव के रिकॉर्ड तोड़ते हुए हमें तो लगता है कि आप तैयारी नहीं करके आए। तैयारी की है तो यहाँ खड़े हैं। अगर तुम तैयारी करते तो वहाँ नहीं यहाँ खड़े होते। गांव गरीब दलित पिछड़े आदिवासी के लिए थे, उनके कल्याण और भविष्य के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन इनको उसकी चिंता नहीं है। देश विपक्ष के अविश्वास से प्रसिद्ध हुआ है कि उनके लिए देश से अधिक दल है। देश से पहली प्राथमिकता दल की है। इनको गरीब की भूख की चिंता नहीं है, इनके सर पर तो सत्ता की भूख सवार है। आपने इस प्रस्ताव की चर्चा किस प्रकार से की है? मैं सोशल मीडिया पर देख सकता हूँ कि आपके दरबारी भी बहुत दुखी हैं। विपक्ष ने फील्डिंग का आयोजन किया, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। मैंने 2018 में कहा था कि 2023 में वापस आना, लेकिन आपने मैं विपक्ष के रवैये पर कहूंगा कि जिनके भई खाते खुद बिगड़े हैं वे हमसे सब लिए फिरते हैं। हमारा ध्यान देश के विकास पर होना चाहिए, ये समय की मांग है। हमने युवाओं को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, आकांक्षाएं और अवसर दिए हैं। हमने देश की ऊंचाइयों पर और एक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उस प्रतिष्ठा को दाग लगाना चाहते हैं। इस अविश्वास प्रस्ताव में कुछ बातें इतनी अजीब हैं कि ना कभी पहले देखी गई, ना कभी पहले सुनी गई और कभी कल्पना भी नहीं की गई। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता का नाम वक्ताओं में नहीं था। ये समय अधीर बाबू को क्या हुआ? उनकी पार्टी ने बोलने का अवसर नहीं दिया। आदरणीय स्पीकर महोदय, ये आपकी उदारता है कि आपने उन्हें बोलने का अवसर दिया, नहीं तो उनका समय तो कब का समाप्त हो चुका था। का गोबर कैसे करना है ये लोग इसमें माहिर हैं। लेकिन मैं और मेरी पार्टी अधीर बाबू के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। कुछ विपक्षी दलों ने अपने आचरण से साबित कर दिया है कि उनके लिए पार्टी राष्ट्र से ऊपर है।
इन्हें गरीबों की भूख की चिंता नहीं है, इनके सर पर तो सदा की भूख सवार है। मैंने और मेरी पार्टी ने दुनिया में भारत की बिगड़ी हुई साख को संभाला है, उसे फिर एक बार नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस साख को दाग लगे। लेकिन अब विश्व को भारत जान चुका है और भारत के योगदान पर विश्व का भरोसा बढ़ता चला जा रहा है। जब हम ये दावा करते हैं कि हम अपनी तीसरी अवधि में भारत को विश्व की, अरे ये भी मुझे ही सिखाना पड़ रहा है, ये लोग कि हम पहले नंबर पर आएंगे, यह तो हमारे विपक्ष की त्रासदी है। ये लोग अनुभवहीनता की बातें करते हैं, ये कहते हैं सब वैसा ही होगा जैसा इन्होंने सोचा है, लेकिन इन्हें भारत के लोगों पर विश्वास नहीं है, इन्हें भारत के समर्थन पर विश्वास नहीं है। तो बताना चाहता हूं कि भारत के लोगों का भी कांग्रेस के प्रति अविश्वास का भाव बहुत गहरा है। एक पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल है, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं भी पक्ष से बस एक ही बात कहना चाहूंगा, आप तैयारी करके क्यों नहीं आते? अगर तैयारी करते तो मुझ पर यहाँ पर आकर झूठे इल्जाम न लगाते। Who are in favor will please say aye. Those who are against will please say no. The bill stand withdrawn. Now the House will adjourn to meet again tomorrow at 11 a.m.